compound that are synthesized in a living organism, but and they cannot be prepared by any other means. Okay, means you cannot prepare them artificially. So that was organic compounds. That means organic compound was stated like this. Okay, and this was theory was given by Burgess. Burgess was a scientist who said that uh, Burgess, who said that who gives a vital force theory, and he says that a special kind of theory, a mysterious theory, special kind of force, which he called a mysterious force, is being required to convert organic substances artificially in the lab. Means, if you want to convert protein in the lab, it is not practically possible. You cannot prepare. It can be only prepared inside a living organism like plants and animals. You cannot prepare the artificially the organic compounds. So Bargelis says that it is not practically possible that we can have an means organic compound artificially. We need some natural substances from which we can extract. But this theory was proved wrong when Friedrich Wöhler, Friedrich Wöhler make Friedrich Wöhler make urea, which is a organic waste in human beings, organic waste in human beings, okay, or mammals generally, urea. The urea, which is an organic waste, generally, it was prepared by, it is an organic compound, which is prepared in a living organism, but he prepared this one artificial from ammonium cyanide. He took ammonium cyanide, okay, and when he heat it, it gives NH2, C double bond O, NH2. They both have same molecular formula, two nitrogen atoms, four hydrogens, one carbon, one oxygen, one oxygen. So this is ammonium cyanide, and this one is urea, and it was prepared by Friedrich Wöhler artificially. This is the first organic compound. This is the organic, first organic compound that was artificially, specially prepared in lab from an inorganic substance. This is inorganic. Inorganic means that is not present in the living organism. Inorganic. It is inorganic substance. Inorganic substance. You understood this one? समझ आया? हाँ? Oh, yes, sir. So अभी मैं लिखाता हूँ तुम्हें ये. एक मिनट. बस एक मिनट.
Start writing from here. Done? Sir, done. Okay. So Burgelis, he said that in 1855 that it's a special force is being required. Okay. But Friedrich Huller actually prepared ammonia from the ammonium cyanide. Okay. Actually, he was reacting with ammonium chloride with potassium cyanide, and then he formed ammonium cyanide. And when he keep on heating this one, it is urea is formed. So he proved vital force theory wrong by preparing organic compound from urea.
Done. 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 Okay. Now the organic compound. Now there is a new definition for the organic compound. The organic compounds are now you know that now we are not going to have the same definition because the organic compounds are those compounds that are present in the living and natural substances. No, because we have created it's artificially. So how can we say that it is present in the only in the natural substances? So these compounds, these are the compounds of carbons and hydrogens and their derivatives. Okay, like this. They may also contain nitrogen, phosphorus, sulfur, and sodium and potassium. Okay, means these are the compound of carbon. And they must have the carbon compounds and carbon and hydrogens. Hydrocarbon we togetherly form hydrocarbon. So these are the compounds of carbon and hydrogens. कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं पहले समझ लो. Deri- जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कार्बन कंपाउंड है CH4 मीथेन. अब इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करा दी तो ये क्या बनेगा. एक हाइड्रोजन हटेगा इसमें से और एक क्लोरीन उससे अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन जो यहाँ बचा है और जो ये हटा हुआ है दे बोथ विल फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये कंपाउंड भी CH3Cl भी ना इस मीथेन का डेरिवेटिव माना जाएगा बिकॉज ये उसी से ड्राइव हुआ है. तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी में आता है. मतलब these are the compounds of hydrocarbons and their derivative. They may also contain nitrogen, phosphorus, sulfur and metals like sodium and potassium. देखो. Done. One second.
Zelda. Okay. Okay. So then we shall be going to discuss about the carbon. Okay, now let's study about the carbon. What's carbon is actually? Okay. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग इतना क्यों अ, इस तरह से पढ़ते हैं। ओके, और कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में विल गोइंग टू डिस्कस दिस वन, क्योंकि बेसिक से कार्बन इसको फिर हम लोग बहुत एनहेंस लेवल पर लेके जाएंगे, मतलब एडवांस लेवल पर। फिलहाल बेसिक्स तो आए कम से कम पहले। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन नेचर में पाया जाता है एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, या कुछ कार्बोनेट्स की फॉर्म में। इन एटमॉस्फेयर इट इज फाउंड इन 0.03%। अर्थ प्लस में ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम वगैरह की फॉर्म में ये इट इज 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड पेट्रोल। ओके, कार्बन में मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए हमने कार्बन की ऐसी व्हाट इज दैट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इज मेकिंग इट डिफरेंट एंड मेकिंग इट so versatile nature that it is making large number of compounds and keep on making. We'll discuss this one. Okay, and we studies chemistry in basically in three parts. Okay, like the physical chemistry, inorganic chemistry, inorganic. Physical, we are studying mole concept, volume, pressure, molarity, equilibrium. Okay, inorganic chemistry will study the periodic table, like the elements, the about the arrangements of elements, their natures, SPDF groups, periodic classifications. These, and and organic chemistry, we study about the hydrocarbons and their derivatives. Okay, so moving further, that why is carbon so versatile in nature? The first of all, if I'm talking about this one, is that if we do the electronic configuration, the first 20 elements, 2 1 2 1 2 comma 1, then 2, then 2 comma 1 2 comma 3, you will find that carbon is the only element, first element, which is having the smallest size with 4 electron in its outermost shell. Other, the next one which is having 4 electron in its outermost shell is silicon, but it is having 3 shells, means 284, which is bigger in size, and due to extra shell size bigger, and that affects many properties of uh, like the carbon is going to have. Okay, so if I'm talking about the carbon is so much means it is having only 2 and 4 2 comma 4 electronic configuration. It is having 2 shells which is having 4 electrons. So its valency is 4. So if I ask you the valency of lithium, it is 1, beryllium is 2, carbon is 4. Sorry, barium is boron is 3, carbon is 4. Then nitrogen again have 3. It does not have 5. 3. Then 2, then 1, and then 0. Because it will, when it is having 5, that it will borrow 3, not donate 5. Okay. So if I'm talking about these elements, we'll simply say that 2 comma 4, 2 comma 5, 2 comma 6, 2 comma 7. Okay. Now 2 comma 4 means that it is tetravalent in nature, and it can make bond with four different atoms and 4 similar atoms at the same time. Okay. So it is tetravalent. First of all, it is tetravalent. Second one is that due to small size, its bonding is matlab, what is that thing that hold the bonded pair of electron? That is the nucleus. So if you see that it is carbon, it is very close to the outermost shell. It is having only 2 shells, so the nucleus is very close to this one. So that's why it attracts shorter bond length to the nucleus. So these bonded pair of electrons will be holded, means in better way, as compared to silicon, which is having bigger size because of an extra shell. And okay, these electrons. But one thing you can consider here, one thing that
still the carbon is having 6 electron, 2 comma 4. So it is having 6 proton also. So in case of silicon, silicon have 14 proton and 14. Okay. So we can say that the nucleus of, if the distance between them is increasing, let's suppose the distance in इसके बीच में बढ़ गया एक एक्स्ट्रा शेल की वजह से, तो न्यूक्लियस भी तो पावरफुल हो गया ना, उसकी भी तो पावर बढ़ गई. But there is one thing, there is we can say that why it is not holding now so much strong, because इसमें 8 प्रोटॉन भी तो बढ़े हैं. अगर 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या हुआ, अगर वो थोड़ा दूर हो गया तो न्यूक्लियस भी तो पावरफुल हो गया ना, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. तो इसके लिए एक रीजन है यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ओके, वो शील्ड हो जाता है. इट इज शील्डेड. यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू हैव अ फैन ब्लेड एंड अ फैन इज रोटेटिंग. आपके पास एक फैन है, वो रोटेट कर रहा है. तो यू विल सी दैट इट्स क्लाउड, इट विल फॉर्म अ क्लाउड. एंड इफ if I increase the more number of blade into it, then the visibility of seeing the roof, इसके बीच में से छत दिखे, उसकी visibility कम हो जाएगी. Like the sun during the cloudy day, sun will not be appear, डायरेक्टली दिखता नहीं है आपको, तो हम बोलेंगे कि वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी रेडिएशन उतनी आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ द क्लाउड. यानी क्लाउड्स ने सन को शील्ड कर लिया. सेम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन दो द सिलिकॉन का वो पावरफुल है, न्यूक्लियस पावरफुल है, कार्बन का पावरफुल नहीं है इतना न्यूक्लियस, सिलिकॉन का ज्यादा पावरफुल है. बट when it is having this 8 extra electron, these electrons rotate in such a manner that means ये बहुत ही तेज घूमते हैं, जिसकी वजह से ये एक क्लाउड क्रिएट कर देता है. एक ऐसा क्लाउड क्रिएट कर देता है, मतलब एक एक बाउंड्री सी क्रिएट कर देते हैं, जिससे न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखता नहीं उतनी पावर का. जैसे क्लाउडी डे पर सूरज निकलता तो हर दिन उतनी एफिशिएंसी से है, लेकिन क्लाउडी डे पर वो उतना गर्म नहीं कर पाता जितना नॉन क्लाउडी डे पर करता है, क्योंकि सूरज तो उतना ही दूर है, लेकिन फिर भी पावरफुल होने के बाद भी वो दिखता नहीं है, बिकॉज दिस दैट हीट इज या द सनलाइट इज शील्डेड बाय द क्लाउड. सेम दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन अंदर के हैं, ये इतना तेज घूमते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन, इन तक न्यूक्लियस का चार्ज पहुंच ही नहीं पाता. दैट वी कॉल्ड इट शील्डिंग इफेक्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट. समझ आया. तो सिलिकॉन में अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं, मतलब अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब, और कार्बन में पुअर शील्डिंग, जितना खराब घटिया पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना ही न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन विजिबल होगा. समझ आए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ कार्बन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद नेक्स्ट इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस उनको दिखता है. बट यहाँ पर शील्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस उतना पावरफुल जितना है, ये उतना पावरफुल पहुंचता नहीं है वहां तक. समझ आया. तो दैट्स वाई इन इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड बनते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते, बिकॉज एक तो डिस्टेंस भी बढ़ गया और दूसरा शील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ने, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैव शील्डेड द इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया है. समझ आया. पृथ्वी का सच में Yes, कर sir. रहे हैं? पक्का. Yes, sir, I got it. ट्राई करना, नहीं तो फिर से समझा दूंगा जब रैयान क्लास ज्वाइन करेगा, अभी आज उसका नेटवर्क इशू है. तो ये लिखो जरा.
Sir, done. और बस डन ऋत्विका. Sir, 1 second. Sir, done. Okay. Now, what is that special property? Next type of property that a carbon is going to show to have a large number of compound is covalent bond. It may covalent bond. Covalent bond is a type of bond which is formed by sharing of electrons. Like, let me explain you that what is sharing bond and what is the difference between the one type of bond is formed that I'm having, like I'm going to explain you with example of sodium chloride. Sodium is having 281 electronic configuration and chlorine is having 287. Nearest noble gas is neon for sodium and it is having 2 comma 8. And for chlorine is argon which is having 2 comma 8 comma 8. So every element wants to have a stable electronic configuration to its nearest noble gas. So it is having 7 electrons, लेकिन उसको क्लोरीन को क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन की जगह पर 8 चाहिए. Who needs 8 electrons? So what it will do, it will donate its electron. वो donate कर देगा. समझ आया? Yes, sir. परमानेंटली जैसे ही डोनेट करेगा तो it will become Na1 positive and Cl when gate gains 1 electron it will become Cl minus R and will also have 288 now. Before it was having 287, now it is having 288. Before it was having 281, but it is having 28. So they both are stable now. They both are stable. After one is permanently giving, another one is permanently accepting. This type of bonds is called ionic bond. Ionic bond, which is the strongest bond in the whole chemistry. First strongest bond. उससे ज्यादा मजबूत कोई बॉन्ड नहीं होता. नाउ अच्छा ये क्यों बॉन्डेड है, क्यों, ये तो खुश है ये, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है? रीजन ये है कि इनके बीच में चार्ज है, अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर. And since the electrostatic force is the strongest force, means 10 raised to the power 39 times greater than the gravitational force. 39, 10 raised to the power 39, तो बहुत बड़ा नंबर है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेरी 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 ह्यूज फोर्स. तो अगर वो एटॉमिक लेवल पर हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है. समझ आया? Yes, sir. अब अगर मैं बात करता हूँ आगे सोडियम. सोडियम ने रिएक्ट, अब हम बात करते हैं HCl पे. हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन. ओके, तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट एंड क्लोरीन हैज. अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंटली दे देता है तो हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन विल हैव नेगेटिव चार्ज. तो क्लोरीन तो खुश हो गया लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचा ही नहीं. हाइड्रोजन नियरेस्ट नंबर गैस इज हीलियम. हीलियम हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको भी दो चाहिए. एक तो ऑलरेडी है उसके पास, एक और चाहिए. तो इट विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन परमानेंटली. व्हाट इट विल डू, इट विल शेयर. तो क्या करेगा, शेयर करेगा. क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड है. कुछ देर के लिए हाइड्रोजन विल हैव टू
and कुछ देर के लिए 1 2 3 4 5 6 chlorine will have it. Okay, so that type of bond which is not formed by permanently gaining and permanently losing, rather than it is formed by sharing of it, like carbon. कार्बन जो है वो उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट इज हैविंग 6 एटॉमिक नंबर, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन कार्बन को अगर आप देखोगे तो कार्बन शेयर कर सकता है। कार्बन की बस की नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो ना, जैसे 2 कामा, अब मान लेते हैं ये कार्बन का साइज है, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या होगा पृथ्वी का साइज ऑफ दैट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि अभी भी इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो जैसे टग ऑफ वार का गेम होता है, टग ऑफ वार, Oh, yes, sir. इधर 6 लोग हैं, उधर भी 6 लोग हैं, तो बराबर बराबर हो गई बात। लेकिन इधर 5 हो जाएंगे, उधर 6 हो जाएंगे, तो इधर वाला जीत जाएगा। तो अगर इधर 6 हैं और 5 है, तो ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग द लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे प्रोटॉन्स अट्रैक्शन फोर्स इज मोर। तो वो क्या करेंगे, इस शेल को जो पहले यहाँ घूम रहा था उसका साइज श्रिंक करके इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास घुमाना शुरू कर देंगे। फिर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और दोगे तो अब की बार फिर से प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन 4। So as the atom keep on losing the electrons, the size of the atom decreases. डिक्रीज करने से क्या नुकसान हो रहा है कि जैसे ही साइज डिक्रीज होगा, ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही साइज साइज डिक्रीज हो रहा है पृथ्वी का, अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया। अब बारी बारी करके पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया पास में। तो अब इसको एक्सपोनेंशियली मोर फोर्स लगेगी। मान लेते हैं पहले में लगी थी 1,000 जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाने में निकालने लगी 10 10 लाख जूल, चलो मान लेते हैं 1 लाख जूल, उसका 100 गुना, फिर हो सकता है कि उसका 10 करोड़ गुना, मतलब लगे, इतना इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल दैट कार्बन कैन लूज ऑल 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 पॉजिटिव है। तो कार्बन लूज भी नहीं कर सकता, कार्बन गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि गेन कर लेगा तो उसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 प्रोटॉन है। और अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, अपने तो 4 हैं और एक्स्ट्रा 4 ले लिए, तो अकेले ने C4 नेगेटिव आयन बनाया, तो 6 प्रोटॉन के बस की नहीं है कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को और होल्ड कर ले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इनका साइज बढ़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो पहले साइज इतना था 1 2 3 4, अब जैसे ही तुमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करे तो साइज इतना बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फोर्स कम हो गई न्यूक्लियस की। तो अब साइज बढ़ने से क्या होगा, ये दूर चला गया, समझ आया? और फिर ये होल्ड नहीं कर पाएगा, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कार्बन ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो करे तो फिर क्या करे? तो फिर वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही परमानेंटली लूज ना ही परमानेंटली गेन। कहेगा दोस्ती कर लो भाई, शेयरिंग कर लो अगर करनी है तो इस तरह से कार्बन, ये हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट्स पूरे कर लेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, और ये ऐसे अपना ऑक्टेट पूरा कर, समझ आया? Oh, yes, sir. तो इस तरह से कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। गॉट इट? Yes, sir. चलो जरा इसको लिखो।
When you done, please let me know. Okay. Done. Now, what is this catenation property? कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग मतलब कोई एक एलिमेंट अपने आप से बॉन्ड बना ले तो उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो O2 लिखता है। क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो N2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो N2। ऑक्सीजन O3 ओजोन में बनाता है। सल्फर S8 मॉलिक्यूल बनाता है, S8 8 सल्फर एटम जुड़ जाते हैं। तो दे आर शोइंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग में अपने जैसे एलिमेंट से बॉन्ड बनाना, मेकिंग बॉन्ड विद इट्स ओन काइंड्स ऑफ एटम्स। Carbon, due to its previous three properties, that it is the smallest size atom, the other atom don't have such a smallest size. Means other have, but they are not having tetravalence. Like hydrogen, hydrogen is the smallest element, but it is not tetravalent. It cannot take four bonds in one go. It can make only one bond. So carbon, because of its previous three properties, that it can make covalent bond. Covalent bond is a strong, second strongest bond after dianic bond. They form stable compound. The compounds which are formed by covalent bond, they are stable. Secondly, it is smaller in size and it's tetravalent. Because of these previous three properties, the carbon show catenation properties to the maximum extent. Like carbon can make bonds with carbon atom join together. Thousands of carbon atom can join together. Not only they can join in a straight chain, they can join in rings like this way. They can make double bonds, they can make triple bonds, they can make single bonds. So there is versatile just because of carbon's tetravalency. Okay. So start adding this one, that catenation. What is catenation? Catenation is self-linking property in which element can make bonds with its own kinds of atom. For example, oxygen, oxygen, this nitrogen, nitrogen, all are showing catenation property. Okay, उसके बाद, but in case of carbon, due to small size, covalent bond and tetravalency, carbon show catenation property to the maximum extent. मतलब बहुत हद तक शो करता है। नहीं तो अदर एलिमेंट ज्यादा 8 से 9 एलिमेंट ज्वाइन कर जाते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं करते। 8 से 9 एटम्स ज्वाइन कर जाते हैं।
लेकिन कार्बन में तो थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम कैन ज्वाइन टुगेदर, नॉट ओनली इन स्टेट्स एंड they can join in branch like this way, like they can join like this, carbon carbon atom straight chain में join कर दें, they can join in branch like this way, like this way, they can join in rings, they can join in rings, तो इस अलग अलग तरीके से बॉन्ड ये बना सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस, यही कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि वो इतना बना पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? मैंने बताया स्मॉल साइज कोवलेंट बॉन्ड टेट्रावैलेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे लिखो फटाफट से। डन। Yes, sir, done. अब यही एक्सप्लेनेशन क्लियर थी कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लूज कर सकता और क्यों गेन नहीं कर सकता, क्यों वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में एलोट्रॉप्स के बारे में। ओके, तो अभी है 3 मिनट्स, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन ओवर दिस।
क्या आंसर होगा ऋत्विक? अरे यार उसने तो आंसर भी दे दिया। ये जो तो फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखो NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये नमक और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, पत्थर पहाड़ होते हैं इसके। कार्बन, और मैंने बताया कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होने चाहिए, तो NaCl में कार्बन नहीं है, H2SO4 में भी कार्बन नहीं है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन तो है लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं है उसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मस्त है, समझ आया? यस सर। The ability of carbon to form long chain is called catechation. Okay. यस सर। Which is the following property make carbon versatile in nature? High melting point, ability to gain electron, ability to form four covalent bond. This C, चार covalent आता है. Which of the following is not characterized characteristics of organic compounds? Organic compounds का high melting point होता है, low melting and boiling points, highly soluble in water. Organic compound पानी में नहीं घुलते. Okay, वो क्यों नहीं घुलते? We'll discuss it in the next class. Silicon also show catenation property like carbon but limited. Why? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है. CC bond is stronger than SSI bond in silicon silicon bonds. क्यों? क्योंकि because of the bigger size of silicon and गुड शील्डिंग इफेक्ट, उसके अंदर शील्ड ज्यादा अच्छे से हो जाता है ना, गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमते एक्स्ट्रा शेल की वजह से, तो जो न्यूक्लियस उसका, इवन दो उसका 14 न्यूक्लियस प्रोटॉन होने के बाद भी वो उतना चार्ज पहुंच नहीं पाता उसके पास, समझ